Welcome back. Now, Shiv Sena's upped the ante against columnist Shobha De in Mumbai. Now, Shiv Sena brought its ire literally to Shobha De's doorstep, protesting outside her residence. The action was against her tweet slamming the state government's decision to show Marathi movies during prime time in multiplexes. In fact, Shiv Seniks had brought vada pav and dahi misal in plates for Shobha De and sent them upstairs to her house. Not surprisingly, De refused to accept the food and sent it back. The gift after Shobha De had taunted the state government's decision, saying popcorns would soon be replaced by vada pav and dahi misal in theatres. But what really seems to have earned Shiv Sena's anger is her accompanying tweet describing Chief Minister Fadnavis as a dictator and that the diktat was nothing but dadagiri. All right, so Shobha De in fact says now through her tweet that there's another protest that is likely to take place outside her house at 4 this evening in just a short while from now. The first batch of protesters was whisked away by the police, but the protesters were in fact in the morning able to send her a plate full of Marathi snacks which she had tweeted about, and Shobha De of course sent that plate back. Later on, Shobha De spoke with Headlines Today and clearly said that her status as a Maharashtrian should not be questioned just because she dissents. Viren Singh Gunawat spoke to Shobha De just a short while back. Let's quickly listen in to what she had to say. शिवसेना एक जोरदार प्रदर्शन करती है शोभा दे के घर के बाहर। इस वक्त हमारे साथ शोभा दी जी है। हमें पूरा जो प्रोटेस्ट हुआ है, पहले विनोद तावड़े अपना स्टेटमेंट देते हैं मराठी फिल्म के मल्टीप्लेक्स को लेकर, उसके बाद आपका ट्वीट आता है, ट्वीट के बाद वापस से प्रिविलेज मोशन आता है, फिर आपका जवाब आता है, उसके बाद आज सुबह प्रदर्शन पूरा होता है और एक बार फिर अभी आरपीआई भी आने वाली है। तो किस तरह से आप ये पूरा देख रहे हैं? ये जो क्राइसिस क्रिएट की है वो इट्स अ पॉलिटिकल स्टंट और इट्स सिटीजन्स के को दबाने के लिए, उनको जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको इट्स अटेम्प्ट टू इंटिमिडेट। और जो मैंने कहा था, मैंने कुछ बिल्कुल गलत नहीं कहा था। मैंने फिल्म स्क्रीनिंग के बारे नहीं कहा था, उसके टाइमिंग के बारे कहा था। शिवसेना कहना है कि आप खुद मराठी महिला हैं, आप महाराष्ट्र में पैदा हुई है, आप सामना में काफ़ी बातें कही है, लेकिन आपको क्या लगता है कि वाकई में जो मेन मुद्दा यह था कि मराठी फिल्मों को प्राइम टाइम में मल्टीप्लेक्स में जगह मिलना चाहिए, 1 शो 2 शो या नहीं मिलना चाहिए, उसको लेके आपका ट्वीट है? मैंने इतना ही कहा था कि इट्स अ कंसल्टेटिव प्रोसेस। उन्होंने मल्टीप्लेक्स ओनर्स के साथ भी कुछ चर्चा की नहीं। दे डिडंट टॉक टू द फिल्म इंडस्ट्री, नॉर द मराठी फिल्म इंडस्ट्री, नॉर द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। दिस इज नॉट द राइट वे टू डू इट इन अ डेमोक्रेसी। सबको कंसल्ट करके फिर यू कैन मेक एनी अनाउंसमेंट विच सूट्स एवरीबॉडी, दैट्स ऑल। एंड ये भी बात सच है कि मल्टीप्लेक्स ओनर्स के भी कमर्शियल इंटरेस्ट होते हैं, दे आर रनिंग अ बिजनेस। सो इफ यू डू दिस काइंड ऑफ अ डिक्टेट, इट्स नॉट फेयर. In a democracy, right to free business practices, you must respect that. शिवसेना का एक कहना है कि मराठी समुदाय के लिए आपने अपमानजनक का ट्वीट किया है और महाराष्ट्र के लिए दुर्भाग्य है। आपको क्या लगता है? आपने तो वड़ा पाव प्लेट भी अपने घर के अंदर ले लिया, बाद में आपने लौटा दिया। जी नहीं, मेरे घर पे अभी भी है। वी आर ऑल गोइंग टू शेयर इट। सवाल ये है कि व्हेन दे आर टॉकिंग अबाउट महाराष्ट्र का अपमान हुआ है, जब वो जो उन्होंने भाषा यूज़ करी है मेरे बारे इन सामना, मैं समझती हूँ वो इंसल्ट है महाराष्ट्र के औरतों का। एनी महाराष्ट्रन ऐसे इन अ डिसेंट सोसाइटी ऐसी भाषा कोई वापर, इट्स अ वेरी वेरी बैड सिग्नल। एंड इफ एनीबॉडी हैज़ टू बी अशेम्ड, इट शुड बी सामना to use such language against any individual, against any citizen. सिटीजन एक ही चीज़ चाहती है कि आप माफ़ी मांगे। किससे? उनसे? जो भी ट्वीट किया है, जो भी एक पूरे इश्यू को लेकर आपसे वो चाहते हैं अपॉलॉजी करें। बट अपॉलॉजी करने के लायक देयर हैज टू बी अ रीजन। यू कांट जस्ट गिव एन अपॉलॉजी फॉर व्हाट? So if you give an apology, it means that I've done something wrong. I've done nothing wrong, and let the assembly decide that. Right. I have not offended anybody. It's not. I've not used abuse. I've not insulted anybody, and I have not said anything that I'm not entitled to say as a citizen of India. I'll take it two questions in English, ma'am. The protest which is going on by the Shiv Sena, and now the RPI is coming back and with the vada pav and the dahi misal plate. Do you love both the things, or you hate both the things? You love popcorn? I like popcorn. I like dahi misal. I like many other snacks, as we all do. So it is a very foolish thing to try and make a political issue out of dahi misal and vada pav. So I don't want to even comment on that. It's a delicious snack. I've grown up eating it as a Maharashtrian. Why they target me is something you will have to ask them.
because ऐसे मुझे तो ऐसे लग रहा है that being a Maharashtrian is now a disadvantage for someone like myself, because they go on about my being a Maharashtrian and what apman are they talking about? I'd like to know that. Let them define that apman. Then I can respond to it. What is the apman? Apman is against me. They've insulted me. And the protest which is going on outside your building. That's okay. They're entitled to a protest. I have nothing to say against that. But when you use abusive language in print against any person, that is an insult, not what I have said. And coming to the main topic, ma'am, the core issue, the prime time show for the Marathi film in the multiplex. Do you really want or you don't want anything? I am completely okay with it. They can also show it from on all screens at prime time. They can take an entire multiplex only for Marathi films. But if you're serious, if any party or any government is serious about helping a film industry, whether it's a Marathi film industry, the Hindi film industry, or a regional cinema, there has to be a serious attempt to help. Yeah, I had said that the government should share with people what is their plan to help the industry. कि 5 साल का कुछ plan होना चाहिए, that this is what we want to do. We want to set up studios, we want to subsidize movies, we want to take away entertainment tax. Marathi films do have a lot of advantages of being shot in Maharashtra. They can give them further advantages to encourage the industry, which deserves to be encouraged. But this is not the way to do it.